Hello, Civil Service aspirants. I welcome you all to the YouTube live program organized by StudyIQ. In today's class, I will discuss about Karl Marx theory of class and class struggle. It's very important from the point of view of the examination, that is civil service. Okay, so let me explain you what is the theory of class and class struggle as given by Karl Marx. I want to tell you the fact that Karl Marx was an extraordinarily gifted historian, philosopher, and thinker. Karl Marx, for the purpose of explaining class, says that class is an aggregate of persons, those who perform the same function in the process of production. ପିଲାମାନେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ। ସେ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଭାବନ୍ତି class refers to the economic position of a person or class refers to the occupation of a person. जो लोकमानकर ऑक्युपेशन समान आमे सेमानकु गोटे क्लास रे बा सेम क्लास रे रखंती. फॉर एग्जांपल, all teachers are put in the same class, all doctors are put in the same class, all engineers are placed in the same class, all IS officers are placed in the same class. But Karl Marx's approach of explaining class is quite unique. Karl Marx कौन कहउचंती? सी कहउचंती class is an aggregate of persons, those who perform the same function in the process of production. अर्थात जो लोक माने सेम काम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रे करंती सेमानकर सेम क्लास हबो. ऑक्युपेशन को नै कि सेम क्लास रे लोक माने रहिबे बोलिकी कार्ल मार्क्स कहूनाती. से कहउचनी सेम काम करूथिबा दरकार. फॉर एग्जांपल मु कहूची, देखो गोटे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल अछि जोठी 200 जन डाक्टर काम करूचंती. 200 जन डाक्टर अछंती से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल ले. 200 जन डाक्टर को भितरु 2 जन डाक्टर जो माने पैसा खर्च करिसंती एवं से हॉस्पिटल रो मालिक होइचंती. जोठी आउ 198 जन डाक्तर कोन करूचंती ना डाक्तर हिसाब रे काम करूचंती. तेनो ऑक्युपेशन टाकू देखि देले 200 जन डॉक्टर बिलोंग टू द सेम ऑक्युपेशन, किंतु से माने गोटे क्लास रे जिबे नाही कार्ल मार्क्स को एनालिसिस रे. काहे कि प्रथम 2 जन डाक्तर जी पैसा खर्च करिकी हॉस्पिटल तैयारी करिचंती, दे आर द ओनर ऑफ दैट हॉस्पिटल in which 198 doctors are working as working doctors. So occupation wise 200 doctors belong to the same class. आमे जदि ऑक्युपेशन देखिबा, किंतु कार्ल मार्क्स कर इंटरप्रिटेशन दे 200 जन डाक्टर रु 2 जन डाक्टर हेले दे बिलोंग टू ओनर क्लास and remaining 198 doctors belong to the working class. तेनु ऑक्युपेशन को नेकी क्लासिफिकेशन करिबा कथा कार्ल मार्क्स कहूनाती. सी कहउचंती वर्क प्रोडक्शन एक्टिविटीज रे लोकटे कौन काम करूची दैट मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर पुटिंग हिम इन ए स्पेसिफिक क्लास. समस्ते क्लियरली बुझिल व्हाट ए क्लास इज ऑल अबाउट. क्लास बुझिगल. कार्ल मार्क्स कर थियोरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल कहिले हमें कौन बुझंती? कार्ल मार्क्स गोटे बही लिखिले. बहीर ना होची दास कैपिटल. दास कैपिटल बही रे गोटे पोर्शन रे से थियोरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल को डेवलप करछन. बहीर ना होची दास कैपिटल. दास कैपिटल सी लिखि परिबो, के लिखि परिबो, उभय. टाइटल ऑफ द बुक इज दास कैपिटल. ई बही रे
Karl Marx has discussed about the theory of class and class struggle. Actually, theory of a class and class struggle theme by essence hochi how in future a classless society will emerge, that is a communist society. So in the theory of a class and class struggle, Karl Marx has made a prediction with respect to how in future a classless society, that is a communist society, would emerge all over the world. ଏଟାକୁ ସେ theory of class and class struggle discussion କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି what is a class, ତାପରେ what is class struggle। Class struggle means conflict of interest between two classes। conflict of interest between two classes is called class struggle। ପିଲାମାନେ दीटा क्लास भितर कौन कॉन्फ्लिक्ट अच्छी सेटा को क्लास स्ट्रगल कहा जाए। कार्ल मार्क्स कहउचंती इन एवरी सोसाइटी यू विल फाइंड देयर आर टू अपोजिट क्लासेस। कौन दीटा अपोजिट क्लासेस, गोटे क्लास होची ओनर क्लास, ओनर क्लास, आउ गोटे क्लास होची वर्कर क्लास। सो इन एवरी सोसाइटी देयर एक्जिस्ट्स the conflict of interest between the owner class। owner class is also called have class। ए owner class टाको कार्ल मार्क्स कहउचंती haves class। owner class रो ना worker class रो आउ गोटे ना कार्ल मार्क्स देचंती, that is the have nots class। have nots class। so in every society there exists a conflict of interest between the haves class and the haves not class। This conflict of interest between the haves class and the have-nots class is called class struggle or class conflict। पिला माने आमी जदि कहिबा मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी कथा चिंता करो, ई कहउचंती मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे दीटा क्लास अछन। देखिए गोटे क्लास हला ओनर ऑफ द इंडस्ट्री, दैट इज इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, आउ गोटे क्लास होची इंडस्ट्रियल वर्कर क्लास। आंक भितर केमिति कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अछि कार्ल मार्क्स का भाषा रे। कार्ल मार्क्स कहउचंती the industrialists want the industrial worker to work for a long period of time by taking less wage। industrialist माने चाहूचंती इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास बेसी काम करू कम दरमा नो। on the other hand the industrial worker class want to work for a less period of time, less number of hours with more wage। ई दृष्टि देखिले देयर एक्जिस्ट्स ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास एंड द इंडस्ट्रियल वर्कर क्लास, दैट इज कॉल्ड क्लास कॉन्फ्लिक्ट और क्लास स्ट्रगल। बुझी होची। सो व्हाट इज ए क्लास बुझेली, व्हाट इज ए क्लास स्ट्रगल बुझेली। सो क्लास स्ट्रगल और क्लास कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द owner class and the worker class। owner class is called have class and worker class is called have nots class। this conflict of interest between the two group is called class conflict or class struggle। and I want to tell you the fact that in the theory of class and class struggle, Karl Marx has adopted evolutionism or evolutionary approach। theory of class और class struggle ले कार्ल मार्क्स evolutionism अप्लाई करछथि। evolutionism ISM evolutionism in the theory of class and class struggle, Karl Marx has adopted evolutionism। कौन evolutionism? evolutionism is also called evolutionary approach। evolutionary approach कहिले तमे कौन बुझ? slow, steady and कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज। सोसाइटी रे पृथ्वी रे चेंजटा केमिति स्लोली स्टीडीली और कंटिन्यूअसली चली, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशनिज्म। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, कार्ल मार्क्स हैज अडॉप्टेड इवोल्यूशनिज्म और इवोल्यूशनरी अप्रोच। बाय अडॉप्टिंग इवोल्यूशनरी अप्रोच, कार्ल मार्क्स डिवाइडेड the European society into 4 stages। वर्तमान क्लास स्ट्रगल विषय डिस्कशन करिया पे जाउछथि।
कार्ल मार्क्स होचंदी वेस्टर्न सोसाइटी लोक। कार्ल मार्क्स जन्म होते जर्मनी रे, किछि दिन पई पळै गले कोठे कि लंडन पळै गले, तापर आसिकी रशिया रे काम कले किछि दिन। तेनु ए हिसाब रे देखिया पई गले कार्ल मार्क्स यूरोप रा लोक थिले। तेनु सी यूरोपियन सोसाइटी रे केमिति चेंज हेछि स्लोली स्टीडीली आउ कंटिन्यूअसली से विषय डिस्कशन करिकी कहउचंती जे यूरोपियन सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन हैज पास्ड थ्रू 4 डिस्टिंक्टिव एंड सक्सेसिव स्टेजेस। से इवोल्यूशनरी अप्रोच अडॉप्ट कले। अडॉप्ट करके इवोल्यूशनरी अप्रोच कार्ल मार्क्स कौन कले ना बाय अप्लाइंग इवोल्यूशनरी अप्रोच, by applying evolutionism or evolutionary approach, Karl Marx divided the European society into 4 stages। 4टा स्टेज रे डिवाइड कर देइछन्ती। कौन से 4टा स्टेज? प्रिमिटिव कम्युनिज्म, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, सेकंड एंशिएंट slavery, third medieval feudalism, fourth modern capitalism। पिलामाने, I want to tell you the fact that Karl Marx applied evolutionary approach and divided the European society into 4 stages, namely primitive communism, ancient slavery, medieval feudalism, and modern capitalism. What are the 4 stages? Come to first primitive communism. Primitive means very, very ancient. Communism means spirit of equality. से कहउचंती long ago, once upon a time in Europe, communism means the spirit of equality was prevailing among the people unconsciously, undeliberately, unintentionally। जे गोटे समय यूरोप रो लोक माने कम्युनिस्ट सोसाइटी रे थिले, किंतु से माने जानि नथिले जे से सोसाइटी कम्युनिस्ट सोसाइटी केमिति। long ago, while civilization was not dawned in Europe, people were wandering in jungle in nude condition, and whenever they were feeling hungry, plucking the fruits from the trees of the jungle for satiating their hunger. Whenever they were feeling thirsty, they were fetching drinking water from the streams or rivers of the jungle and quenching their thirstiness. At that point of time, communism was prevailing, that is unconscious communism, undeliberate communism, unrecognized communism, unintended communism। से कहउचंती जेतबळे यूरोप रो लोक माने बन जंगल रे बसवास करुथिले, सेतबळे जेतबळे भोक करुथिला गछरु फळ तोलिकी खाउथिले, शोष करुथिला झरनारू पानी पिउथिले, सेतबळे प्राइवेट प्रॉपर्टी नथिला। जंगलटाकू कौनसी लोक कहू नथिला एटा मोर जंगल, गछटाकू कौनसी लोक कहू नथिला एटा मोर गछ सेटा तोर गछ। ता माने सेठी प्राइवेट प्रॉपर्टी नथिला। सेठी प्राइवेट प्रॉपर्टी जेते नथिला, सेठी क्लास नथिला। क्लास जेतबळे नथिला, क्लास डिवीजन भी नथिला। क्लास डिवीजन जेतबळे नथिला, क्लास स्ट्रगल भी नथिला। तेनो प्रिमिटिव कम्युनिज्म होची सेही स्टेजटा। सो प्रिमिटिव कम्युनिज्म इज ए क्लासलेस सोसाइटी। Primitive communism is a private property less society. Primitive communism is a class struggle less society। ता माने primitive communism means no private property। आर फीचर सब कौन? no private property, no private property, no class, no class struggle, no class conflict or class struggle। primitive communism माने ए सिचुएशन यूरोप रे थिला। there was no private property, there was no class, there was no class conflict।
तापरे इवोल्यूशन प्रोसेस रे सोसाइटी नेक्स्ट स्टेज को गला नेक्स्ट स्टेज रा ना होची एंशिएंट स्लेवरी एंशिएंट स्लेवरी रे कोन हला कार्ल मार्क्स कहउचंती दीटा ग्रुप रो लोक आसिले किछि लोक those who were physically strong and stout they captured the physically weak people so strong people became slave master weak people became slave तेनो ancient slavery रे दीटा ग्रुप रो लोक आसिले ए जो ancient slavery stage एठी दीटा ग्रुप रो लोक आसले slave masters और slave masters और slaves so in ancient slavery कौन है जो लोक माने फिजिकली स्ट्रांग थिले से माने वीक लोक को कैप्चर कर देले एंशिएंट स्लेवरी पीरियड रे कैटल रियरिंग एक्टिविटीज आसिला गो पालन पशु पालन एक्टिविटी आसिला स्ट्रांग लोक माने पशु मानकर मालिक ही गले एवं से माने स्लेव रखिले वीक लोक को रेस्पॉन्सिबिलिटी देले तांकर पशु को चरेवा पाई so I want to tell you the fact that in ancient slavery first time class emerged private property emerged private property कौन है private property होची slave private property होची cattle तेनो slave रो मालिक हेले slave master cattle रो मालिक हेले slave master so private property first time came in second stage of evolution private property is slave private property is cattle so in society as private property came for the first time so two type of classes emerged one class is owner of private property that is the slave master other is the slave कौन है slave मानको रो freedom नथिला slave मानको slaves were depending upon the mercy of the master ये दृष्टिरो slaves were exploited by the slave master so for the first time there emerged conflict of interest between slave master and slave that is called class struggle or class conflict then society also progressed in the paths of evolution next stage came next stage माने medieval feudalism stage रे कौन हला ना एठी agricultural activities पड़ी आसला medieval feudalism रे agricultural activities आसिला some people possessed plenty patches of agricultural land they became feudal lord बोल की गोटे क्लास आसला feudal lord another group of people those who were not having agricultural land they took the land from the lord on the basis of tenancy worked on it and gave certain part of the product to the feudal lord they are called feudal serf then second group hela feudal serf lord hochi owner of agricultural land सर्फ है टिलर ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पाखे चाष जमी ना चाष जमी चाष करुच्ची किछि पोर्सन धर 10 क्विंटाल पाइला धान तार अधा देदेला क्या ओनर को फ्यूडाल लॉर्ड को देदेला सो इन दिस वे आई वांट टू टेल यू द फैक्ट दैट इन मेडिवल फ्यूडलिज्म there emerged two classes one is the feudal lord who is the owner of the agricultural land second is the feudal serf who is not the owner of land but worker of the agricultural land there existed conflict of interest between feudal lord and feudal serf that is called class struggle or class conflict in third stage of evolution that is medieval feudalism then society progressed in the paths of evolution. Next stage came in Europe that is called modern capitalism. Modern capitalism रे कौन है industry became the main center of production. So in modern capitalism two classes emerged. One class is industrialist, owner of the industry, industrialists. Second is called industrial worker. इंडस्ट्रियल वर्कर्स इंडस्ट्रियलिस्ट लगी कार्ल मार्क्स गोटे जर्मन कॉन्सेप्ट यूज करछन दैट इज बोर्जुआ
बुर्जुआ अर्थ इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियल वर्कर लगी गोटे जर्मन कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स यूज करचंदी दैट इज प्रोलेटारिएट बुर्जुआ एक्चुअली गोटे सॉरी बुर्जुआटा गोटे फ्रेंच कॉन्सेप्ट फ्रेंच रिवोल्यूशन एटा फर्स्ट टाइम यूज होइथला किंतु सेठी बुर्जुआटा यूज होइथला मिडिल क्लास लगी कार्ल मार्क्स एटा को यूज करचंदी बुर्जुआटा होची कोन इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोलेटारिएट हला इंडस्ट्रियल वर्कर तेनो मॉडर्न कैपिटलिज्म जेतळे आसिला those who became the owner of industry they are called bourgeois those who were not the owner of industry but worked in industry and got wage they are called proletariat तेनो देखो कैपिटलिज्म पीरियड रे इंडस्ट्रियलिस्ट work the industrial worker to work for a long period of time with less wage and industrial workers want to work for loss industrial workers want to work for less number of hours and they want more wage in this way there exists conflict of interest between industrialist that is bourgeois and industrial worker that is proletariat this conflict of interest between bourgeois and proletariat is called class conflict or class struggle in modern capitalist society बुझे तेणु ये हिसाब रे आमे देखिले प्रिमिटिव कम्युनिज्म रे क्लास नथिला प्राइवेट प्रॉपर्टी नथिला क्लास स्ट्रगल नथिला किंतु एंशिएंट स्लावरी पाखरु आरंभ करिकी मॉडर्न कैपिटलिज्म ये जो तीनटा स्टेज रहिला एठी प्राइवेट प्रॉपर्टी रहिला एठी क्लास रहिला एठी क्लास डिवीजन रहिला एठी क्लास स्ट्रगल रहिला फ्यूचर रे क्लास स्ट्रगल कौन हबो ये कथा डिस्कशन कार्ल मार्क्स करचंती इन हिज थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल कार्ल मार्क्स कहउचंती फ्यूचर रे क्लास स्ट्रगल टा हटि जिवो क्लास स्ट्रगल हटिकी गोटे क्लासलेस सोसाइटी फ्यूचर रे आसीबो सेटा केमिति आसीबो मु डिस्कशन करिवि ता पूर्वरु मु देखि दउची तमर जदी किछि क्वेरीज अछि वर्तमान पर्यंत जहा मु पढेइछि ताकू आगे एड्रेस कर दउची खिरोद बराद इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी एटा मार्क्स वेबर टॉपिक रे पढेबी मार्क्स वेबर आउ दिने मु पढेबी खिरोद सेठी मु इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी कोन कहिबी इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी खाली शॉर्टकट रे मने रखि थाओ पॉजिटिव सोशियोलॉजी साइंटिफिक सोशियोलॉजी रो अपोजिट होची इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी पॉजिटिव सोशियोलॉजी दरखेम आउ अगस्ट कॉम्ट कहिचंती तार अपोजिट अप्रोच मार्क्स वेबर कहिचंती डिटेल डिस्कशन मार्क्स वेबर क्लास रे करिबी ओके ठीक अछि आउ कहार किछि क्वेरीज नाही आस तेनो ए हिसाब रे मु तुमको बुझैली क्लास कॉन्फ्लिक्ट केमिति फर्स्ट स्टेज को छाड़ी की रिमेनिंग तीनटा स्टेज रे थिला कारण फर्स्ट स्टेज टा प्रिमिटिव कम्युनिज्म सेठी प्राइवेट प्रॉपर्टी नथिला सेठी क्लास नथिला सेठी क्लास डिवीजन नथिला सेठी क्लास स्ट्रगल नथिला पिला माने इन एडिशन टू दिस आई वांट टू टेल यू द फैक्ट दैट In addition to this, I want to tell you the fact that in context of his theory of class and class struggle, Karl Marx has adopted historicism or historical approach. Theory of class and class struggle context, Karl Marx historicism apply करचंती historicism. In context of the theory of class and class struggle, Karl Marx has adopted historicism. What is historicism? Historicism अर्थ होची a society's present is analyzed by considering its past and predicting its future. ता माने historicism tries to establish a connection between present, past and future. Past, present आउ फ्यूचर संगरे जी लिंक कराए सही अप्रोच टा ना होची हिस्टोरिसिज्म इन अदर वर्ड्स आई वांट टू टेल यू द फैक्ट हिस्ट्री प्लस इजिम दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिसिज्म हिस्ट्री मीन्स द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पास्ट इजिम मीन्स फिलोसफी और अप्रोच so historicism is an approach by which a society's
present is studied by considering its past and predicting its future. This is called historicism. Or in other words, I want to tell you the fact, a society's present is rooted in the past and projected into future. Karl Marx को approach रे केमिति historicism अछि, कारण देखो जो क्लास स्ट्रगल टाको मु डिस्कशन कली, कार्ल मार्क्स कहउछन्ती पास्ट रे क्लास स्ट्रगल कोन थिला, कहिली प्रिमिटिव कम्युनिज्म रे क्लास स्ट्रगल नथिला, एंशिएंट स्लाभर रे रहिला, मिडिवल फ्यूडलिज्म रे रहिला, मॉडर्न कैपिटलिज्म रे रहिला, तापरे पुणी कहउछन्ती फ्यूचर को कौन हम, फ्यूचर को क्लास स्ट्रगल रहिबो नाही। एही हिसाब रे कार्ल मार्क्स को अप्रोच रे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर से माने इंटरकनेक्टेड हे जिबारु कार्ल मार्क्स को अप्रोच को कुहा होची हिस्टोरिसिज्म। सो आई वांट टू टेल यू द फैक्ट दैट कार्ल मार्क्स हैज अडॉप्टेड historicism just to explain his theory of class and class struggle. Okay, so right now come to the context of class and class struggle in modern capitalist society. जदिओ कार्ल मार्क्स theory of class and class struggle discussion करूछन्ती in general, but I want to tell you the fact that every person is the product of his time, society, situation, circumstances and surrounding. Marx is not an exception to it. Karl Marx was born and brought up in such a crucial juncture of time in Europe, while European society was experiencing industrialization. The industrial workers were the victims of inhuman exploitation and oppression. So this suffering of industrial workers captivated the attention of Karl Marx. So Karl Marx wanted how to bring a classless society in future. That's the reason in his theory of class and class struggle, though Karl Marx has made a general discussion with respect to class and class struggle, but he has given 2/3 weightage to the theory of class and class struggle in modern capitalist society. जदि 300 पृष्ठार बहिटाए हुए 200 पृष्ठा से डिस्कसन होती क्लास आउ क्लास स्ट्रगल केमिति मॉडर्न सोसाइटी रे चलची, कारण मार्क्स हिमसेल्फ वाज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी। तेनु केमिति मॉडर्न सोसाइटी रे क्लास आउ क्लास स्ट्रगल चलीची, जहा फल रे फ्यूचर रे ए क्लासलेस सोसाइटी आसीबो। राइट नाउ कम टू दैट डिस्कशन। सो theory of class and class struggle in modern capitalist society। पिला माने देखो modern capitalist society रे कौन अच्छी, इंडस्ट्री इज द मेन मोड ऑफ प्रोडक्शन। मु कहिची इंडस्ट्री रे प्रोडक्शन चलची, इंडस्ट्री रे वर्कर माने इनह्यूमन कंडीशन रे एक्सप्लॉइटेड हेकी काम करूचंती। तेनो कार्ल मार्क्स होचंती मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी रो सबठे इंपोर्टेंट जिंस होची एमर्जेंस ऑफ प्रोलेटारिएट। प्रोलेटारिएट अर्थ होची इंडस्ट्रियल वर्कर्स। देखो कार्ल मार्क्स कहउचंती इंडस्ट्रियल वर्कर टा गोटे हैव नॉट्स, हैव कहले ओनर, हैव नॉट्स कहले वर्कर। जे आगुरु भी वर्कर आउ ओनर थिले, किंतु इंडस्ट्रियल वर्कर एज हैव नॉट्स इज क्वाइट यूनिक, इज क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड इज क्वाइट सेपरेट फ्रॉम अदर हैव नॉट्स ऑफ हिस्ट्री। देखो एंशिएंट स्लेवरी रे हैव नॉट्स कहले स्लेव, मिडिवल फ्यूडलिज्म रे हैव नॉट्स कहले किए तमर फ्यूडल सर्फ, मॉडर्न कैपिटलिज्म रे हैव नॉट्स कहले तमर प्रोलेटारिएट। किंतु ए जो दीटा हैव नॉट्स अलगा पीरियड रहिले किए ना, फर्स्ट होची तमर स्लेव, सेकेंड टा होची सर्फ। स्लेव कहले कृतदास, सर्फ कहले जे भाग चासी बोली कि तमे धर नब, जार जगह नाही, जमी नाही, से लैंडलॉर्ड पाखर जगह नै कि जमी नै कि चाष करछि, से माने हैव नॉट्स। इंडस्ट्रियल वर्कर भी हैव नॉट्स। इन इंडस्ट्रियल वर्कर को आमे कहले प्रोलेटारिएट। प्रोलेटारिएट इज एज ए हैव नॉट्स इज यूनिक, इज डिस्टिंक्ट, इज सेपरेट फ्रॉम अदर हैव नॉट्स ऑफ सोसाइटी। केमिति? कारण देखो जेतेबेले स्लाभरी थिला, गोरु चराचरी चलथिला, पशु चराचरी चरौथिले स्लेव माने, सबु स्लेव माने गोटे जगह काम करनथले। फॉर एग्जांपल गोटे स्लेव मास्टर थिला, तार 10टा स्लेव थिले, 10टा स्लेव 10 पल गोरु को नहीं कि अलगा अलगा जगह काम करथिले।
सेकेंड स्टेज तापर नेक्स्ट स्टेज को आस मिडिएवल फ्यूडालिज्म गोटे लैंडलॉर्ड थिला तार 500 एकर जगह थिला 500 एकर जगह को 10-10 एकर करिकी सी 50टा सर्फ को जगह दे देथिला 50टा अलग अलग जगह 50 सर्फ काम करुथिले तेणु हावनट्स माने गोटे जगार काम करने स्कोप पाऊ नथिले आगुरु किंतु ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आसिला सपोज देयर इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट हु हैज इरेक्टेड एन इंडस्ट्री इन व्हिच 5000 वर्कर्स आर वर्किंग आजिका दिन रे टाटा कंपनी हो बिरला कंपनी हो किंबा तुमर आदानी रो कंपनी हो अंबानी रो कंपनी हो गोटे जगार हजार हजार वर्कर काम करिवार स्कोप पाउचंती से कहउचंती कार्ल मार्क्स कहउचंती industrial worker or proletariat as a have-nots is unique because industrial workers are getting physically congregated in one place every day प्रत्येक दिन industrial worker माने वर्क प्लेस रे आसिकी 10टा रे पहुंचुचंती संध्या 5टा पर्यंत सेठी काम करूचंती तांको भितरे प्रत्येक दिन फिजिकल यूनिटी आसुची मार्क्स एठी मटेरियलिज्म कांसेप्ट को अप्लाई करूचंती कार्ल मार्क्स कहउचंती जदि लोक माने फिजिकली गोटे जगह यूनाइटेड हेबे तांको भितरे ऑटोमेटिकली मेंटल यूनिटी आसीबो तमरो एंशिएंट स्लेवरी स्लेव माने गोटे जगह काम करनथले मिडिएवल फ्यूडालिज्म फ्यूडाल सर्फ माने गोटे जगह काम करनथले बट मॉडर्न कैपिटलिज्म थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग इन सेम प्लेस as they are getting physically united there is a possibility of growth or development of mental unity in this way emergence of proletariat has brought higher possibility for making class struggle class conflict successful and in bringing a communist society in future एक कथा से एठी कहउचंती तापरे emergence of proletariat बुझिलो सेकंड जिंस होची इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी ये जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी की कार्ल मार्क्स कहउचंती प्रॉपर्टी लाइन रे हमें डिवाइड करि परिबा कारण मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे दीटा क्लास अछि गोटे होची बोर्जुआ आ गोटे होची प्रोलेटारिएट ए बोर्जुआ और प्रोलेटारिएट डिवीजन ता केमि देछि इंडस्ट्री को नै के हिछि इंडस्ट्री इज द प्रॉपर्टी कारण जी ओनर सी है बोर्जुआ जी ओनर नुहे से प्रोलेटारिएट सो प्रॉपर्टी इज इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी and we can explain class division that is bourgeois and proletariat in modern society in the line of possession of property or dispossession of property जो लोकर इंडस्ट्री रो ओनरशिप अछि सी हला bourgeois जहार ओनरशिप नाही से प्रोलेटारिएट इटा होची सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट को आस थर्ड पॉइंट होची आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी विथ इकोनॉमिक पावर एठी कार्ल मार्क्स कोन करूचंती इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म की अप्लाई करूचंती इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म अप्लाई करूचंती कोन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी विथ इकोनॉमिक पावर पिला माने कार्ल मार्क्स कहउचंती जो लोक पाखरे पैसा अछि सी पावरफुल हे जीवो एवं से सोसाइटी रो अथॉरिटी की इन्फ्लुएंस करि परिबो फॉर एग्जांपल मो कहूची जस्ट 2-4 दिन तलर घटना ओडिशार घटना मु कहि दउची राति अधरे अंबानी बड़ पुओ ओडिशा आसिले पुरी मंदिर को गले राति गोटाए बेले पुरी मंदिर तांका लगी खोलीगला से जगन्नाथ को दर्शन कले तमे जदि राति गोटाए चाहिए जगन्नाथ को दर्शन करि परिबो कारण विथ ड्यू रेस्पेक्ट मु बुझौची कार्ल मार्क्स को लाइन रे बुझौची जे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी विथ इकोनॉमिक पावर कारण अंबानी पुओ जगन्नाथ मंदिर रे जाइके राति रे अधरे जगन्नाथ को दर्शन कले एवं गोटे 1 कोटी टंकार चेक लिखि देके आसले जगन्नाथ को देबा पई ता माने
एथरो जना पड़ुछि जहाँ पाखरे पैसा अच्छी सी सोसाइटी रे पावरफुल हेबो एवं अथॉरिटी ऊपर से इन्फ्लुएंस बा प्रभाव पकई पारिबो बुझी होछि एटा होछि इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म कार्ल मार्क्स कहउचंती द पर्सन हु इज हैविंग मॉनेटरी पावर ही हैज सब्सटेंशियल पावर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सोसाइटी बुझी होछि ना नहीं अच्छा देखि दउछि आउ किछि के डाउट लिखिछ कि ओके हाँ सुदीप्ता गुड मॉर्निंग ओके अच्छा नेक्स्ट होची बुझीगल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी विथ इकोनॉमिक पावर आउ गोटे एग्जांपल दउची धर बर्तमान रिलायंस जियो कहबो मु गोटे फैक्ट्री करी गोटे इंडस्ट्री करी कोठी ना कंधमाल करी कि गोटे इंडस्ट्री करी संबलपुर रे करी आ गोटे साधारण लोकटे कहबो मु इंडस्ट्री करी संबलपुर रे करी सपोज तमे आईएएस पाई जाइछ तमे वर्तमान कलेक्टर अछ जो एरिया रे गोटे साधारण लोकटे कहूची मु इंडस्ट्री करी इंडस्ट्री करिया पई से आसीबो कलेक्टर पाखरु परमिशन नवा पई तमे ऑफिस रे थिबो से लोकटी के ताकू जानि नाती इंडस्ट्रियलिस्ट हिसाब रे से कोठो लोन फोन आनी कि इंडस्ट्री करिवो तम पाखु जतले परमिशन लागि आसीबो सी तमरो जे प्राइवेट सेक्रेटरी अछि ताकू देखा करिवो तम संगे अपॉइंटमेंट लगी आगुटर प्रायर अपॉइंटमेंट टाइम नब तापर देखा करिवो किंतु जदि टाटा चाहिबो बिरला चाहिबो अंबानी चाहिबो आदानी चाहिबो इंडस्ट्री करिया पई संबलपुर रे से तम ऑफिस की आसीबनी कि तुमको पर पाखरु परमिशन नबनी से डायरेक्ट सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तांको ऑफिस रो कॉल आसीबो जे मु गोटे बड़ इंडस्ट्री करिवि जोठी ओडिसा रे 5000 लोक एम्प्लॉयमेंट पाइबे तेणु जतले टाटा संबलपुर रे आसिक ओल्हेइब टाटा कंपनी जी हेड चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तार दिने पूर्व तमे कलेक्टर हिसाब से सेठी थिबो तमे दिने आगुर जाई एयरपोर्ट रे पहुंची कि टाटा केमिति सेठी लैंड करिवे तांको रेड कार्पेट रे केमिति वेलकम कराहबो से व्यवस्था तमे करिवो साधारण इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री करिया पई कलेक्टर ऑफिस की दौड़िबो किंतु गोटे एस्टाब्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट जदि इंडस्ट्री करिया पई चाहूची से कलेक्टर ऑफिस की आसीबनी से सीएमओ को फोन करिवो सीएमओ रु फोन आसीबो कलेक्टर पाखको कलेक्टर गो एंड रिसीव टाटा और बिरला और डालमिया और अंबानी देयर इन द एयरपोर्ट विथ रेड कार्पेट बुझी होची दिस इज इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म आर अर्थ होची पीपल दोज हु आर हैविंग मॉनेटरी पावर they have the ability to influence the decision making power of the society they can influence also the authority बुझियला next point of criticism next point हला next point को जिबा पूर्व गोटे important announcement कर दउची स्टडी आईक्यू रे मु पढौची ethics जीएस पेपर 4 social issues जीएस पेपर 1 इंग्लिश एसे ता संगे सोशियोलॉजी पढौची एथिक्स पेपर आमर आरंभ होची आसंता पर दिन 5 जून रे सकाळ 8:30 रे तमर आईएएस और ओएस सिलेबस रो रिटिन परीक्षा रे केते ना 1750 मार्क रो रिटिन रो वेटेज ता भितर 1100 मार्क मु पढौची स्टडी आईक्यू रे अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो कंडक्ट 1-to-1 इंटरव्यू बोथ फॉर आईएएस एंड ओएस एग्जाम मोर टेलीग्राम चैनल होची थिंक सिविल सर्विसेज थिंक सरोज सामल सर तमे जदि मो पाखे पढ़िया चाहूच मो गाइडेंस से स्टडी आईक्यू रे ताले स्टडी आईक्यू रो ए नंबर 76400300 ए नंबर रे तमे कनेक्टेड हे परिबो तमर जहा क्वेरीज अछि पचारि परिबो राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट with respect to class and class struggle in modern capitalist society नेक्स्ट पॉइंट है alienation alienation नो अर्थ कौन मेक ए डेरिवेशन align plus ation that is alienation align means foreigner ation means process पिला माने तमे जतले विदेश को जाओ तमर देश कथा बहुत मने पड़े
पैसा रोजगार करने पे विदेश को जो माने जाइछंती ओडिया माने बा भारतीय माने जाइछंती विभिन्न पूजा पर्व रे भारत कथा बा ओडिशा कथा ओडिशार पूजा पर्व कथा मने पड़े तेणु से जो फिलिंगटा आसे से फिलिंगटा भल फिलिंग नुहे से माने थांती फिजिकली गोटे जगार किंतु सब बड़े मन भितर मातृभूमि थाए तेणु फॉरेन लैंड रे आमे कंफर्टेबल फील करंतिनी सो feeling of a foreigner is characterized by discomfort. What is alienation? Alienation means a feeling of a displeasure, a feeling of discomfort on part of the industrial worker. The industrial workers are working in industry. Whenever they work in industry, they don't feel comfortable in industry. काहे धर्म है कम करवा कम कले कहीं कंफर्टेबल लगुनि कारण से माने फील करुचंती आमे काम करुचु नॉट बिकॉज वर्क गिव्स अस सैटिस्फैक्शन बट बिकॉज वर्क गिव्स अस मनी और वेज आमे काम करुचु पैसा पाई वेज पाई बट द नेचर ऑफ वर्क डज नॉट गिव ऑफ सैटिस्फैक्शन दिस इज कॉल्ड एलिनेशन एलिनेशन गोटे सेपरेट थ्योरी अच्छी से डिटेल डिस्कशन करी एठी एति कहूची whenever the industrial workers are working in industry they don't feel satisfied they don't feel comfortable and while they don't work inside the industry they feel comfortable they feel satisfied this is called alienation tar karan hochi they think that if we work sincerely the industrialist would prosper and would be exploited by the industrialist that's the reason whenever they are working they don't feel satisfied. Come to next होची polarization कौन polarization पिला माने देख polarization कहले polarize plus ation that is polarization polarize plus ation that is polarization polarize means to move towards two opposite poles ation means process गोटे बार मैग्नेट रो दीटा पोल थाए नॉर्थ पोल साउथ पोल जदि दीटा परस्पर विरोधी पोल आड़ को मूवमेंट होची दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन देखो कैपिटलिस्ट सोसाइटी कथा चिंता करो कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे गोटे जगह रे गोटे साइड रे अछि बुर्जुआ आउ गोटे साइड रे अछि प्रोलेटारिएट आउ गोटे पोल रे अछि प्रोलेटारिएट मझी रे अछंती मिडिल क्लास भी अछंती डॉक्टर इंजीनियर आईएएस ऑफिसर ओएस ऑफिसर एमान सब अछंती आईटी प्रोफेशनल एमान मिडिल क्लास कार्ल मार्क्स कहउचंती कैपिटलिज्म रो जेतिकी ग्रोथ हबो मिडिल क्लास सेतिकी परिमाण में डिसअपियर कर जीवो केमिति देखो मिडिल क्लास रो एस्पिरेशन अछि केमिति से बुर्जुआ हबो कारण बुर्जुआ सबठु ऊपर प्रोलेटारिएट सबठु तळे मझिरे रहिला मिडिल क्लास तेणु बुर्जुआ सबठु ऊपर अछि प्रत्येक लोक चाहे तार पोजिशन टाको इंप्रूव करिया पे आ मिडिल क्लास रो एस्पिरेशन अधिका थाए तेणु मिडिल क्लास चाहिबो मु इंडस्ट्रियलिस्ट हेबी केमिति इंडस्ट्रियलिस्ट हेबी इंडस्ट्री करिया पे ता पाखरे पैसा नाही तेणु से लोन नबो बैंक रो लोन नबो नै कि से इंडस्ट्री करिवो जेतले इंडस्ट्री करिवो इंडस्ट्रियलिस्ट का संगे बहुत मिडिल क्लास लोन आनी कि जो माने इंडस्ट्री कले से माने कम्पीट करि परिबेनी काहे करि परिबेनी पिला माने टाटा रो होची 200 वर्ष रो कंपनी टाटा रो जो ब्रांड वैल्यू अछि गोटे नुवा लोक टाटा कंपनी संगे कम्पीट करिया पई ताकू सेतिक पैसा एडवर्टाइजमेंट रे खर्च करिया पई पड़िबो बुझी होची नुआ लोकटे इंडस्ट्री कला गोटे प्रोडक्ट कला क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मे बी वेरी गुड किंतु मार्केट रे तार डिमांड रहिबो कि नाही हम केमिन जानिबा जदि एडवर्टाइजमेंट प्रथमे से दबो मार्केट रे लोक ता प्रोडक्ट जानिबे तापर किनिबे तेनो 200 वर्ष हलानी टाटा कंपनी जेमती चलैछि तार इंडस्ट्री ता संगे नुआ लोकटे दी दिन तळे करथिया कंपनी रो ओनर जेते भलो प्रोडक्ट कले ता संगे कम्पीट करिया एते सहज नुहे बड़ बड़ कंपनी मानकर कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन टर्म्स ऑफ 1000 crores बुझे होची एग्जांपल मु दउची पार्ले जी गोटे छोटिया कंपनी पार्ले जी आजिकर ग्लोबलाइजेशन पीरियड पार्ले जी बी करूची कोल्ड ड्रिंक्स
कोका कोला भी करुच्ची कोल्ड ड्रिंक्स। पार्ले जी वर्ष सारा जेतिकी प्रोडक्ट करुच्ची वर्ष सारा जेतिकी प्रोडक्ट करुच्ची से प्रोडक्ट रो वैल्यू है 300 कोटी। पार्ले जी वर्ष सारा जेतिकी प्रोडक्ट तैयारी करुच्ची तार वैल्यू है 300 कोटी। द टोटल टर्नओवर ऑफ पार्ले जी इज 300 crores but the annual budget for advertisement of Coca-Cola company is 400 crores। 400 कोटी रु अधिका टंका खाली एडवर्टाइजमेंट रे खर्च करछि कोका कोला। तेनो पार्ले जी आ कोका कोला संगे कंपटीशन हेले कोका कोला सपोज कोका कोला तार कला कोल्ड ड्रिंक्स पार्ले जी गोटे नुआ कोल्ड ड्रिंक्स कला तार क्वालिटी सपोज भारी भल किंतु लोक केमिति जानिबे एडवर्टाइजमेंट देले जानिबे। पार्ले जी रो तो समुदाय प्रोडक्ट रो टर्नओवर वर्ष को होची 300 कोटी ताठू अधिका पैसा कोका कोला कंपनी खाली एडवर्टाइजमेंट रे खर्च कर दोची। तेनो कोन हबो पार्ले जी जदि एडवर्टाइजमेंट दवा पई चेष्टा करियो सी हमर छोटकाटिया ए जो रीजनल सिनेस्टार मान को आनिकी दब सी अति जोरे अनुभव महांती की आनिकी तार प्रोडक्ट रो ब्रांड एम्बेसडर करिवो नले अर्चिता साहू को करिवो हला आ सी कोन आमिर खान को करि परिवो। आमिर खान को करिया पे हेले 100 कोटी टका दवा पे पड़िवो ना। तेनो कोका कोला कंपनी तार ब्रांड एम्बेसडर करछि काहाकू आमिर खान को। आमिर खान जेतळे एडवर्टाइजमेंट देबे से केबे ठंडा मतलब कोका कोला। आमिर खान कर जो ब्रांड वैल्यू अच्छी जेतिकी पॉपुलैरिटी अच्छी लोक भाविए कोका कोला ही एकमात्र ठंडा आउ किछि ठंडा नुहे। तो ठंडा मतलब कोका कोला। आमिर खान कहिबे अनुभव महांती कहइबो अर्चिता साहू कहइबो भीतर तफात नहीं। तेनो जो माने बड़ बड़ इंडस्ट्रियलिस्ट से माने सब बळे चाहिबे नुआ लोक केमिति इंडस्ट्रियलिस्ट न हुंतु तांको बुड़ेइबार उपाय हला हाई वोल्टेज एडवर्टाइजमेंट बड़ बड़ कंपनी देबे। तेणु कार्ल मार्क्स कहते मिडिल क्लास लोकंकर आस्पिरेशन आसिला से माने चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट होगापाई से माने बैंक रु लोन आनिले हाई वोल्टेज एडवर्टाइजमेंट रे से टंका खर्च करदेबे करदेले किछि केते दिन करिवे तंकर तो नुआ कंपनी ता भितरे उठी पारंती न उठी पारंती। कार्ल मार्क्स कहउचंती बहुत लोक मिडिल क्लास रे जो माने अछंती जहाँकर हायर एस्पिरेशन आसिला से माने कम्पीट करिवे कार बिग बुर्जुआ संगे करिकी से माने लॉस करिदेबे लॉस करिकी से मानकर पोजीशन तळु को खसी जीवो दे वुड बिकम प्रोलेटेरिएट। ओनली अ फ्यू पीपल एमंग द मिडिल क्लास वुड राइज एंड दे वुड जॉइन विथ द बुर्जुआ। ए हिसाब रे विथ द पैसेज ऑफ टाइम द मिडिल क्लास विल बी डिसअपियर्ड and the society will be divided into two opposite camps, that is bourgeois and proletariat. The process is called polarization। बुझिलो? So polarization refers to the process by which the middle class will be disappeared in modern capitalist society and the modern capitalist society will be divided into two opposite classes, that is bourgeois and proletariat। okay then dita class re divide he gala that is called polarization। then come to next point। next होची pauperization। pauperization अर्थ कौन pauperize plus ation is called pauperization। pauperize means to make somebody poor, to make proletariat। এটা proletariat কথা কার্ল মার্কস ডিসকাশন to make proletariat poor। ation means process जो प्रोसेस रे प्रोलेटारिएट माने इंडस्ट्रियल वर्कर माने पुअर हो जाउछंती दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉपराइजेशन। कारण इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सप्लॉइट करूची इंडस्ट्रियल वर्कर को बेसी समय काम करूची कम पैसा दोची दैट्स द रीजन इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर बिकमिंग पुअर द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉपराइजेशन। नेक्स्ट इज सरप्लस वैल्यू। कौन सरप्लस वैल्यू पिला माने देखो सपोज गोटे इंडस्ट्रियल वर्कर सकाळ 10टारू जाउची इंडस्ट्री की संध्या 5टा पर्यंत काम कला 7 घंटा घंटे ब्रेक दे दियो 6 घंटार काम कला। गोटे इंडस्ट्रियल वर्कर जाकि इंडस्ट्री प्रत्येक दिन 6 घंटा काम कला 6 घंटा काम कले
ताको जहाँ मंथली दरमा मिलूची ताको डेली हिसाब रे जदि आमे देखिदबा ताको 700 टंका पाखापाखी डेली मिलूची डेली ताको 700 टंका मिलूची 6 घंटा काम करची 700 टंका मिलूची कोठी काम करची ना इंडस्ट्री रे काम करची इंडस्ट्री ताको तयारी किए करची इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटल इन्वेस्ट करके तयारी करची एवं सी रॉ मटेरियल भी सब किणुची विभिन्न प्रोडक्ट करिया पई टैक्स गवर्नमेंट को दउची एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस दउची सपोज 6 घंटा काम करके इंडस्ट्रियल वर्कर टी जहाँ प्रोड्यूस कला तार वैल्यू सपोज 6000 टंका गोटे दिन रे काम करके जहाँ प्रोड्यूस कला इंडस्ट्रियल वर्कर तार वैल्यू सपोज 6000 टंका 6 घंटा काम कला 700 टंका वेज नेला 6000 टंकार प्रोडक्ट तैयारी कला इंडस्ट्रियलिस्ट किंतु प्रोडक्ट तैयारी करिया पे रॉ मटेरियल टैक्सेस करके विभिन्न खर्च इंडस्ट्रियलिस्ट अछि सपोज आउ 1400 टंका इंडस्ट्रियलिस्ट रो सॉरी आउ 1300 टंका इंडस्ट्रियलिस्ट खर्च कला फॉर एवरीथिंग फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ चार्जेस माने रॉ मटेरियल पाखरु आरंभ करके एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस एंड टैक्सेस एवरीथिंग तो टोटल व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 700 हला वेज 1300 हला अदर चार्जेस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हला 2000 टंका हला टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ प्रोडक्शन हला 6000 तम 6000 रु 2000 फेडी दबो 6000 minus 2000 4000 is the surplus value आमे एटा को कहंती प्रॉफिट कार्ल मार्क्स कहउचंती एटा सरप्लस वैल्यू माने इंडस्ट्रियल वर्कर को तैयारी करूची किंतु सेटा इंडस्ट्रियल वर्कर ताको नेउ नाही ताको नै जाउची इंडस्ट्रियलिस्ट दैट इज कॉल्ड सरप्लस वैल्यू सो सरप्लस वैल्यू refers to the difference between the worth of production and the cost of production बुझियला तापरे आस नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट होची क्लास सॉलिडारिटी एंड क्लास एंटागोनिज्म कार्ल मार्क्स कहउचंती कोन हबो जे कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स गेव द रिस्पांसिबिलिटी टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड to bring unity among the industrial workers कार्ल मार्क्स कहउचंती सबु इंडस्ट्रियल वर्कर कम्युनिस्ट पार्टी रो बैनर रे सारा पृथ्वी रे खाली गोटे देश नुहे रशिया नुहे कि जर्मनी नुहे कि इंडिया नुहे पृथ्वी सारा विभिन्न फैक्ट्री रे जो वर्कर अछंती से माने कम्युनिस्ट पार्टी रो बैनर तळे ऑर्गेनाइज्ड हेबे एवं तांका भितरे यूनिटी आनिबे एवं तांको एक्सप्लोइटर माने इंडस्ट्रियलिस्ट ता विरुद्ध रे होस्टिलिटी अर्थात एनिमिटी आनिबे दैट इज कॉल्ड क्लास सॉलिडारिटी एंड क्लास एंटागोनिज्म नेक्स्ट स्टेज इज रिवोल्यूशन जेतेबेले सब जिंस हो गला वर्कर माने बर्तमान कोन करिवे रिवोल्यूशन आडू को मुहेइबे रिवोल्यूशन ने कोन करिवे सारा पृथ्वी रो वर्कर माने ऑर्गेनाइज्ड हे गले सारा पृथ्वी रे थिबा इंडस्ट्रियलिस्ट मान को अटैक करिवे तांको प्रॉपर्टी नै जीवा पई चेष्टा करिवे जेतले करिवे प्रथमे पुलिस आसीबो अपोज करिवो किछि पुलिस लोकन को पुलिस मैन को इंडस्ट्रियल वर्कर माने मारी देबे किछि पुलिस की मारी देला परे बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट माने पुलिस माने आउ साहस करिवेनी आंको रिवोल्ट को सप्रेस करिया पई कबे आमे काई जीवो निज को बळी देई कि इंडस्ट्रियलिस्ट मान को प्रोटेक्शन दवा पई निजे काई मरिबो तनु बाकी पुलिस माने आउ साहस करिवेनी बर्तन पुलिस माने पछ घुंचा देले तेनो इंडस्ट्रियल वर्कर माने जाई के अटैक करिवे काहा को इंडस्ट्रियलिस्ट मान को किछि इंडस्ट्रियलिस्ट माने अपोज करिवे जे अपोज करिवे ताकू मार देबे इंडस्ट्रियल वर्कर ताक ई सब देखि कि वायलेंस को बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट घर द्वार छाड़ी की पळेबे all the property of industrialist will be snatched away by the industrial worker in the process of revolution बुझी होची that is revolution परे next stage आसीबो that is dictatorship of proletariat कौन सेटा dictatorship of proletariat पिला माने एटा कम्युनिज्म आसीबार पूर्व अवस्था I told you the fact that workers all over the world have been organized under the banner of Communist Party while they proceed to snatch away the property of the bourgeois
policemen would come forward. Some of the policemen will be killed. कारण सारा पृथ्वी रे वर्कर जदि ऑर्गेनाइज्ड होइजिबे गोटे मेजॉरिटी ग्रुप हबो तांको पाखरे पुलिस रो संख्या भी कम होइजिबो. So police, some of the policemen will be killed. Then rest of the policemen will not dare to suppress the revolution. अलगा पुलिस माने केबेले साहस करिबेनी. Now the workers should proceed toward the house of the bourgeois. They will snatch away their property. Some of the bourgeois will raise obstruction. जतल पुलिस तांको विरोध न करछि से माने करिवे. And those bourgeois will be killed. Then the rest of the bourgeois will also not dare. Right now the property of the bourgeois will be snatched away. ये जो पीरियड टा चलीची इठी वायलेंस चलीची इठी रूल नाही रेगुलेशन नाही अनार्की अराजकता रहुची. दिस इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट माने एकछत्रवाद चलची प्रोलेटारिएट मानकर. कारण प्रोलेटारिएट माने बुर्जुआर प्रॉपर्टी की स्नाच अवे करचंती. किंतु एटा गोटे इनस्टेबिलिटी पीरियड. ये इनस्टेबिलिटी पीरियड टाको कहाउची डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट. अशांति रही समाज रे किंतु बहुत दिन पर्यंत अशांति समाज रे लागिक रहिबा भल कथा नुहे. बर्तमान जो प्रॉपर्टी टाको प्रोलेटारिएट माने आनीचंती आगुरु सेटा थिला बुर्जुआर प्रॉपर्टी बर्तमान प्रोलेटारिएट हाथ रे अछि. किंतु तांकर इफेक्टिव सोशलाइजेशन हबो तांको सिखै दिया हबो जे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आगुरु सिखैछि. प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट कॉज ऑफ क्लास स्ट्रगल और क्लास कॉन्फ्लिक्ट. जहाँ पाखरे प्राइवेट प्रॉपर्टी रही सी ही एक्सप्लॉइटर होइछि. तेणु प्रोलेटारिएट पाखरे बे प्राइवेट प्रॉपर्टी आसीगलान तक हाथ को सेटा भी ठीक जिनस नुहे. तेणु वर्तमान कहब डिपोजिट दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इन ए कॉमन फंड. बुर्जुआ पाखरु आनिल निज पाखरे रखनी ताको रखिबो कोठी कॉमन फंड रे. दैट फंड इज कॉल्ड कम्युनिस्ट फंड. से फंड मालिक किए कौन सी व्यक्ति विशेष से फंड मालिक नुहे सारा पृथ्वीर लोक तार मालिक. बुझे यहाँ शिखे दिया हबो इफेक्टिव सोशलाइजेशन प्रोसेस रे. राइट नाउ व्हाट वुड हैपन. ऑब्वियसली द प्रॉपर्टी दैट हैज बीन स्नैच्ड अवे बाय द बुर्जुआ विल बी डिपोजिटेड इन ए कॉमन फंड. कॉमन फंड रे डिपोजिट हे जिवो. कार्ल मार्क्स कहउचंती private property must be ended because private property is the root cause of exploitation, is the root cause of class struggle, is the root cause of class war. तेणु वर्तमान ए पृथ्वी सारा जेते इंडस्ट्रियलिस्ट अछंती तांकर जहा जहा प्रॉपर्टी रिवोल्यूशन माध्यम रे बुर्जुआंक पाखरु प्रोलेटारिएट माने आनीथिले सेटा को गोटे कॉमन फंड रे कम्युनिस्ट फंड रे डिपोजिट कर दिया हबो. तापरे कोन हबो स्टेट गोटे इंस्टीट्यूशन हिसाब रे एंड ही जीवो. काहे कि स्टेट इज द रूट कॉज ऑफ वार. इंडिया पाकिस्तान वार होची, रशिया यूक्रेन वार होची, इजराइल पैलेस्टाइन वार होची. तेनो स्टेट टा सबले नेशनलिज्म प्रमोट करे. नेशनलिज्म लागी युद्ध लागे. बुझोची. तेनो कार्ल मार्क्स कर अप्रोच होची इंटरनेशनलिज्म. इंटरनेशनलिज्म मीन्स द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली. आमर वैदिक इंडिया रे जो व्यू थिला वसुधैव कुटुंबकम दैट इज इंटरनेशनलिज्म. सारा पृथ्वी होची गोटे परिवार. नेशनलिज्म रो लिमिटेशन होची नेशनलिज्म इज द रूट कॉज ऑफ वार. तेणु कार्ल मार्क्स वांटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ conflict to be ended in future. That's the reason he envisioned for establishment of an egalitarian society all over the world. सेनु पृथ्वी रे जेते प्रॉपर्टी थिला बुर्जुआ मानकर ताकू आनिकी रखी दिया हला कॉमन फंड रे. बर्तन स्टेट दूरेइब, स्टेट डिसअपियर करिवो, पुलिस डिसअपियर करिवो, प्राइवेट प्रॉपर्टी डिसअपियर करिवो. पुलिस कौन करे पावरफुल लोक को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे. तेणु पुलिस इज ऑल्सो एन एक्सप्लॉइटेटिव इंस्टीट्यूशन कार्ल मार्क्स का भाषा रे. तेणु ऑब्वियसली पुलिस विल बी डिसअपियर्ड, प्राइवेट प्रॉपर्टी विल बी डिसअपियर्ड, स्टेट विल बी डिसअपियर्ड, प्रॉपर्टी बिलोंग टू द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. and that is communist society, that is inauguration of communist society. And in communist society every person will work as per his ability. जार जतिक एबिलिटी अच्छी फिजिकली स्ट्रॉन्ग लोकटा अधिका काम करिवो, फिजिकली वीक लोकटा कम काम करिवो,
बुझी होची आईएएस ऑफिसर तार ब्रेन जो लेवल ले काम करिवो वर्कर इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल वर्कर रो ब्रेन से लेवल ले काम करिवनी सो इन कम्युनिस्ट सोसाइटी सारा पृथ्वीटारे कम्युनिज्म पळि आसीबो गोटे ही सोसाइटी हे जीवो कंट्री बोल कि जिंस रहिबनी हला एंड इन कम्युनिस्ट सोसाइटी एवरी पर्सन विल वर्क as per his efficiency and every person will get as per his need. So you can think communist society is just like a joint family. Joint family कौन हुए गोटे परिवार रे पांच भाई थिबे पांच भाई भितर जने किछि रोजगार कर नथियो तार बहुत पिला थिबे से अधिका खर्च करिवो गोटे भाई टोटल मैरिज करना ही सबुठो अधिका इनकम करछि से कहबो कि मु अधिका खर्च करिवि तेणु जार जी नीड अच्छी से अनुजाई से खर्च कर कम्युनिस्ट सोसाइटी दैट टाइप ऑफ सोसाइटी एंड वंस कम्युनिस्ट सोसाइटी कम्स और emergence there would be no class, there would be no private property, there would be no police, okay, there would be no state and peace will prevail all over the world. बुझे होची this is all about Karl Marx theory of class and class struggle. Karl Marx theory of class and class struggle है या तेणु Karl Marx theory of class and class struggle ले Karl Marx historicism अप्लाई करचंदी केमिति से कहउचंती historicism केमिति कले हिस्ट्री प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को जोड़ीले Karl Marx क्लास थियोरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल को आमे डायग्रामेटिकली एमती लिखि परिबा एटा होची प्रिमिटिव कम्युनिज्म प्रिमिटिव पीसी लिखिदेले प्रिमिटिव कम्युनिज्म एटा होची एंशिएंट स्लेवरी एटा होची मिडिवल फ्यूडलिज्म एटा होची मॉडर्न कैपिटलिज्म एटा होची फ्यूचर कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स थियोरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल को आमे एमती रिप्रेजेंट करि परिबा प्रिमिटिव कम्युनिज्म एठी कम्युनिज्म थिला एठी भी कम्युनिज्म अछि एटा एटा भितर डिफरेंस कोन एटा अंडर डेवलप्ड स्टेज एटा डेवलप्ड स्टेज at this stage man was at the mercy of nature at this stage industrial society man is controlling the nature तेनो एटा जहा एटा सेम नुहे एटा कम्युनिज्म but this is undeliberate unplanned unintended unrecognized communism this is deliberate intended recognized communism at this stage society was at the bottom of evolution at this stage society is at the top of evolution बुझे होची this is Karl Marx theory of class and class struggle आपरो केमिति क्वेश्चन पड़ी छी आईएएस परीक्षा रे बा ओएस परीक्षा रे क्वेश्चन पड़िबो the history of all hitherto existing society is history of class struggle क्वेश्चन पड़ी छी कार्ल मार्क्स एक्चुअली ये जो सेंटेंस टी देई संती बहुत लंबा सेंटेंस थिला कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स केते अट्रैक्टिव सेंटेंस लिखि संती देखो से कहउचंती द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एक्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल द फ्री मैन एंड स्लेव्स द पार्टिसंस एंड द प्लेबियन द गिल्ड मास्टर एंड द जर्नीमैन द लॉर्ड एंड सर्फ इन a single word the oppressor and the oppressed stood on constant opposition to each other and carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that ended either in the revolutionary reconstitution of the society at large or in the common ruin of people. Repeating it again. Actually Karl Marx sentence ta तुमको लागिबो गोटे paragraph while Karl Marx wanted to write a sentence it became a paragraph while he wanted to write a paragraph it became a chapter while he wanted to write a chapter it became a book गोटे सेंटेंस को केते लेंथी पैराग्राफ हिसाब रे से कर देई चंती से कहउचंती द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एक्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल द फ्री मैन एंड द स्लेव the patrician and the plebeian, the guildmaster and the journeyman, the lord and the serf, in a single word, the oppressor and the oppressed, carried on an uninterrupted, now hidden,
now open fight, a fight that ended in the revolutionary reconstitution of the society at large or in the common ruin of the nation. बुझी तेणु कार्ल मार्क्स थियोरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल ऊपर डिस्कशन कर से पड़ी. दिस इज ऑल अबाउट कार्ल मार्क्स थियोरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल. ये थियोरी रो इसेंस होची कार्ल मार्क्स कहउचंती क्लास कौन, क्लास स्ट्रगल कौन, आगुरु कौन थिला क्लास स्ट्रगल रो नेचर, किमिति प्रिमिटिव कम्युनिज्म रे क्लास स्ट्रगल नथिला, एंशिएंट स्लेवरी रे किमिति फर्स्ट टाइम क्लास स्ट्रगल आसिला, मिडिवल फ्यूडालिज्म मॉडर्न कैपिटलिज्म रे एटा किमिति कंटिन्यू कला, एवं फ्यूचर रे जेतेबेले कम्युनिस्ट सोसाइटी आसीबो क्लास स्ट्रगल रो नेचर कौन हम, क्लास स्ट्रगल पुणी डिसअपियर कर जिवो. अर्थात पास्ट रे नथिला क्लास स्ट्रगल, फ्यूचर रे रहिबो नाही क्लास स्ट्रगल, मझी पीरियड गुडा रे रहिला क्लास स्ट्रगल. दिस इज हिस्टोरिसिज्म. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल. पिला माने तेनो गोटे इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दउची जे स्टडी आईक्यू रे मो एथिक्स आरंभ करुची ए 5 तारिख दिन, अर्थात आज 3 तारिख पर दिन गुरुवार दिन सकाळ 8:30 रु 10:30 2 घंटार क्लास नेबी. ओके, तेनो स्टडी आईक्यू रे ओएस आउ आईएस लगी तमर जो सिलेबस रिटिन सिलेबस रे 1750 मार्क अच्छी. 1750 मार्क रु 1100 मार्क रो पाठ मु पढ़ाऊची. कौन कौन पढ़ाऊची कहि दउची. सोशियोलॉजी ऑप्शनल 500 मार्क, इंग्लिश एसे 250 मार्क, एथिक्स 250 मार्क, एटिके गला 1000. ता संगरे जीएस पेपर 1 जोटा सोशल इश्यू बोली कि आमे कहउचंती, सोशियो इकोनॉमिक इश्यू बोली कहउचंती, सेटा 100 मार्क. एमती 1100 मार्क रो मु पढ़ाऊची. अपार्ट फ्रॉम दैट 1-to-1 इंटरव्यू भी मैं कंडक्ट करची बोथ आईएएस और ओएस परीक्षा लगी. तमे जदि मो गाइडेंस रे प्रिपेयर करिया पई चाहूछ ओएस और आईएएस एग्जाम लगी, you can get connected with the number that is 7640000300. ए नंबर रे कांटेक्ट करिवो. तमर जहा क्वेरीज अछि एडमिशन संबंध रे तमे ताकू पचारि परिवो. ओके, सो today's discussion in YouTube live related to the theory of class and class struggle is over. Let me wind up the class now. Thank you for attending today's class.